Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Rana Waqas Shakir, Fellow Neonatology from Children's Hospital Multan. I have privilege to moderate this session, and it's my pleasure to welcome you all Neo Colloquium 2022. Topic of this workshop is Kangaroo Mother Care, a simple tool for a bigger problem. We all know hypothermia is the biggest killer in neonates, especially premature babies in low-income countries like Pakistan. And management of hypothermia is obviously very costly. To overcome this issue, Kangaroo Mother Care is alternative and effective tool. Even we can adopt it in the rural areas. We will be together in this session till 11 a.m. The chief guest of this session is Professor Brigadier Shahid Mahmood. He is head of Neonatology Department, CMH Rawalpindi. He did fellowship in neonatology from Royal College of Pediatric and Child Health. He has fellowship of 4 Royal Colleges. He also has special interest in neonatal neurology. He is author of many publications. Thank you, sir, for being here. Another chief guest is Dr. Tahir Manzoor. He is health specialist in UNICEF. We have great speaker of this session today, Professor Rubina Sohail. She is professor of Obs and Gynae, currently working as consultant in Hamid Latif Hospital. She is chairperson, International Federation of Gynae and Obs Committee on Violence Against Women. Former president, South Asian Federation of Gynae and Obs. She is vice president, Menopause Society of Pakistan. She is also awarded Youngest Gynecologist Award in 1995. She is pioneer of Kangaroo Mother Care in Pakistan. Let's start this session. Please, madam, come on the stage. Thank you. Bismillah Rahman Rahim. Our chief guest of today, Brigadier Saab, Dr. Irfan, and my team, Dr. Noreen Rasool, Dr. Akila, and Miss, I've forgotten her name, and Mole, yes, and Miss Mole. I wanted to introduce the team to you, especially because, you know, nothing can be achieved till you have a team. And Dr. Noreen Rasool is a very, very important part of our team, and all the credit that I go and take that we set up the first Kangaroo Mother Care unit in Pakistan. And we have been instrumental actually in setting up many units in Pakistan, but Noreen Rasool has been the backbone of all that effort. So Noreen is the backbone of that. And Dr. Akila has been our second very, very important person who has been a part of the team right from the inception. And these girls have helped us develop a very strong team who can go everywhere and train the doctors and the healthcare providers. So the question is that why are we talking about Kangaroo Mother Care today? Why do we need to talk about the evidence-based interventions for saving newborn lives? And let me give you a perspective regarding Pakistan. Pakistan mein situation ye hai that the United Nations Children Agency has declared Pakistan as one of the riskiest countries in the world to have a delivery. And the reason for that is that out of every 1,000 babies born, 46 are going to die before the end of the month. And this was the year 2018 when it was declared. Or Pakistan ke ye halat the ki there were 10 top countries in the world where
there was the highest rate of neonatal mortality, and Pakistan was topping the list in 2018, along with Afghanistan and a couple of other countries. So the problem is that the children who are born in Pakistan are at odds of neonatal death. But when that child born is a preterm baby, the odds of neonatal death increase. And that is why we need to put interventions in place by which we should be able to save the babies. So the important thing to remember and the moral of the story is that neonatal mortality is a condition which is preventable, and we have to ensure that all the efforts are taken to save those newborn babies. और आप सरप्राइज होंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज का या न्यूनेटल मोर्टालिटी का इंसिडेंस जो है that is significantly high in our country, but the interventions that need to be done to save these babies are actually very, very simple and easy to do. This is the data of UNICEF showing the neonatal mortality figures, and I have made a small comparison of 3 countries from 2018 and 2021, and looking at them, actually I was depressed. And the reason I was depressed was that Pakistan was topping the list in 2018, but Pakistan is still topping the list in 2021. And the change in the neonatal mortality, which has happened in these 3 important years, which would make 2022 as well, has been insignificant. So the neonatal mortality in Pakistan has reduced from 42 to 40. And this is the median figure, because when I was looking at the figures of UNICEF this morning, this is the median figure. They were the lowest and the highest figures were ranging between 35 and 49. So this is significant that all 3 countries of the world who were top for neonatal mortality are still there. And you know that the situation in Afghanistan has actually worsened. So with the worsening situation in Afghanistan, you expect more neonatal mortality to happen, and I wonder what is going to happen later on. If you look at Pakistan and if you look at the various provinces of Pakistan, the problem is up and down in various provinces. But the important thing that I want to tell you is that Punjab is the biggest province of the country, and Punjab is the province of the country which has the maximum resources. Now, despite the fact that Punjab is probably the richest province in the country, the neonatal mortality keeps on increasing over there, and it is still the highest in the country, despite the fact that there are provinces like Balochistan which are under-resourced and where the resources are poor. So there is something really serious going on in Punjab which needs to be addressed, and that is why we need you to reduce the neonatal mortality. There is something which we call the Sustainable Development Goals. And if you look at the Sustainable Development Goals, you will realize that Sustainable Development Goals actually says that by 2030, by the year 2030, the neonatal mortality should be reduced to as little as 12 by the year 2030. So the question arises, when we are looking at figures of 40, how in the world in the next 8 years are we going to reduce our neonatal mortality from the 40 figure to the figure of 12? It seems like a very daunting task, and that is why we need everybody that we can to get into the bandwagon and start helping us reducing neonatal mortality. And I was a bit disenchanted this morning when I saw the very few people who were actually interested in reducing neonatal mortality and learning about Kangaroo mother care, because I think that it is a very, very important constituent and we need to address this situation urgently. So if you look at this slide, there are basically 3 causes of neonatal mortality. Okay, so there are 3 important causes of neonatal mortality, which are composing of 90% of the causes of neonatal mortality. One of them is prematurity, the other is birth asphyxia, and the third is infection. So in this particular presentation, we want to talk about what are the interventions that we can put in place that will help us reduce the neonatal mortality because of prematurity. And Dr. Noreen and Dr. Keela are going to take you through the session in which we are going to teach you the hands-on skills. But just to remember that we need to do something about our premature babies, and that is what we are here to learn today. Now, as I said in the beginning, that these deaths are the deaths which can be prevented. So the question is that how are we going to prevent a neonate from dying? और अगर मैं ये बात कहूं कि हमने अपने बचपन से अब तक यही देखा, और आपने भी अपने बचपन से अब तक यही देखा होगा कि जो ही बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे को लेके पीड्स वाले भाग जाते हैं, अगर वो आ जाएं तो,
So most of the time, the number of pediatricians, not neonatologists, is also so less that even in government hospitals, every delivery is not attended by a pediatrician. And that is a very, very important point to think about, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है पीड्स वालों की, अगर वो बेबीज को रिसीव ही नहीं करते तो नियोनेटोलॉजी की ट्रेनिंग जो है दैट इज जीरो. But even if they are there, what happens? They take the baby away. So the obstetrician thinks or the midwife thinks that their job is over. शुक्र है बच्चा उनको दे दिया, अब वो जो मर्जी करें. And the pediatrician thinks इन्होंने सही मैनेज नहीं किया, and the obstetrician thinks peds वालों ने सही मैनेज नहीं किया. तो we have never been able to come to a common ground. And I'm so glad today that in Neo Colloquium 2022 and for the last many years since I've met Dr. Irfan, we have been trying to look at it logically and see what can we actually do to reduce the neonatal death. And you would be very happy to know that the interventions that need to be done are very simple. It is basically that you keep the baby as close to the mother as possible, and that is one simple intervention, if I have to say, to reduce neonatal mortality, is to keep the mother and the baby together. So what are the interventions? The first is access to a well-trained midwife, which I am also a midwife. So every healthcare provider who can conduct a safe delivery and has been trained to provide those services is a midwife. Then breastfeeding within the first half an hour of delivery is one of the steps to reduce neonatal death. और ये बात सिर्फ डॉक्टर्स को पता होनी जरूरी नहीं है. It is very important that the mothers to be and the women who are there who are delivering, they need to understand that they need to ask their healthcare provider that I want to breastfeed the baby immediately. And that is extremely important. So this is an intervention to reduce the neonatal mortality. Then putting the baby in skin to skin contact with the mother is of extreme importance, because we don't need to take our babies to incubators which are expensive, difficult to find, and most of the times are not functional or not available. So the mother is the best incubator because she kept the baby for 9 months, didn't she? So she can even keep the baby now. The only thing that is required is to have something by which the baby can be kept in close contact or in skin to skin contact with the mother. And the last thing, which Neo Colloquium is all about, and a very important thing, that we have to make sure that infection can be prevented. So basically, there are 4 interventions, and these 4 interventions can reduce neonatal mortality. And if I ask you this question, which I hope Noreen and Akila will ask the question when they're teaching the skills, do you really think, how many of you think that this is unachievable? है कोई ऐसा हाथ खड़ा करे जो ये समझता हो कि अचीवेबल नहीं है ये 4 इंटरवेंशन? प्रॉबेबली कोई नहीं है. कोई ऐसा है जो समझता है कि अगर हम ये 4 इंटरवेंशंस डालेंगे तो हमारे बच्चे बच जाएंगे? ऐसा कोई है? मुझे पता चल रहा है कौन सुन रहा है कि नहीं. बाकी सारे सो रहे हैं. उठो लड़कियों और लड़कों, एक लड़का जागा हुआ था, आई एम हैप्पी विद हिम. सो मेरा क्वेश्चन दोबारा है, क्या आप ये समझते हो कि अगर हम ये 4 काम करें तो बच्चे मरने से बच सकते हैं? गुड. People are listening now. So the answer is yes, that we can save the babies and the neonates if we can put these 4 interventions. और आज आप यही करने आए हैं. पहली इंटरवेंशन से तो आपका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन the other 3 interventions have to be. So in Hamid Latif Hospital where I work, when I started skin to skin contact and early breastfeeding, so it was very difficult to train the Department of Pediatrics, क्योंकि हमारे वहाँ routine है that every baby that is born, a nurse is going to be there to receive the baby inside the delivery room, and the doctor is right outside the delivery room waiting for the baby to come out. So जो ही बेबी डिलीवर होता था और हमारी असिस्टेंट का काम होता था जल्दी से कॉट क्लैम्प करती थी, और नर्स का काम होता था बच्चे को लेके भागना शुरू कर देती थी बाहर. तो जब हमने ये शुरू किया एंड वी सेड दैट यू नो वी डोंट वांट दिस, वी वांट द बेबी टू बी द मदर, तो मैं उसको फील कर सकती हूँ कि वो जो नर्स थी ना वो ऐसे ऐसे होती थी. शी वॉज फिजिटी बिकॉज शी थॉट कि ये डॉक्टर क्रेजी है, ये बच्चे को मार देगी, ये बच्चा जो है यहीं छोड़ रही है, ना सक्शन प्रॉपर करने दे रही है. सो इफ द बेबी इज क्राइंग, डू यू रियली नीड टू सक द बेबी? द आंसर इज नो. कोई जरूरत नहीं है सक्शन की. अगर बच्चा पैदा हो गया और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, उसकी सिक्रीशंस सारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. Drying of the baby is important to maintain the temperature of the baby, which can be done on the maternal abdomen as well. So मैं कहना ये चाह रही हूँ, it is not about peds or obstetrics. What I'm trying to say is that we have deep rooted values.
और उन वैल्यूज को चेंज करना इवन इन अ प्राइवेट फैसिलिटी व्हिच इज सपोज्ड टू बी अ वेरी गुड फैसिलिटी इन लाहौर, इवन ओवर देयर इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड इवन नाउ जिस दिन कोई नई नर्स होती है डिलीवरी के ऊपर, मुझे पता होता है बच्चा लेके भाग जाएगी, तो मैं उसको कहती हूँ बच्चे को हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो बच्चा माँ के ऊपर, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग विल हैपन टू द बेबी, यू रिलैक्स. सो इफ आई हैव टू से एंड टेल दिस वन स्टोरी, ये वन स्टोरी जो है ये मेरी प्रेजेंटेशन का निचोड़ है, क्योंकि यही है जो हमें करने की जरूरत है फॉर द एडल्ट बेबीज, एडल्ट बेबी नहीं, फॉर द फुल टर्म बेबी एंड फॉर द प्रीमेच्योर बेबी एज वेल. So what is Kangaroo Mother Care? Kangaroo Mother Care is basically, I'm sorry. So basically Kangaroo Mother Care is a solution to save the lives of the babies. And what are we going to do? We want to reduce the neonatal mortality and morbidity. और again, उन्हीं चीजों को जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, मैं उनको convert कर रही हूँ into 3 interventions. And the 3 interventions are: number 1, prevent hypothermia. Prevention of hypothermia basically means dry the baby immediately and make the baby in skin to skin contact with the mother. The second is infection prevention. For that, clean hygienic practices, the use of chlorhexidine gel on the umbilical cord of the baby, and the third thing for infection prevention is that the mother's hand should be clean when she takes care of the baby and avoid too many people. The third intervention is prevention of hypoglycemia, and that can be done by early breastfeeding of the baby. So these important interventions are the ones with which we want to talk about and see. So in interventions को हमने Kangaroo Mother Care में convert किया, and our team went to Vietnam the first time to learn how did they practice it. And the interesting thing that we found was that not only the mothers were doing Kangaroo Mother Care, the skin to skin contact, if the mother is tired or exhausted, can actually also be provided by the father or the mother-in-law or the sister. So in the ward, when these girls went, they found on the patient's beds, on some beds, there were the husbands who were doing skin-to-skin contact, and on some beds, there were the mothers who were doing skin-to-skin contact. So that needs to be kept in mind to avoid fatigue of the mother. So Kangaroo Mother Care interventions include skin-to-skin contact by the baby in the binder. And if you look, I am not sure my arrow is working, but if you look at the picture over here, and this picture has been published with consent, she is the first Kangaroo Mother Care mother of our country, and the baby is in this pink binder. She's wearing a light pink gown, और ये gown हमारी अपनी intervention इसलिए थी because our women are not wearing front open shirts. So जब हमने Kangaroo Mother Care के लिए binder पहनाया तो we realized कि इन shirts के साथ तो ये हो ही नहीं सकता. So हमने UNICEF वालों से, who were a big support to us, we requested them that we need to add a gown which was front openable into the KMC kit bag, जो कि डॉक्टर नौरीन ने और डॉक्टर कीला ने वहां बड़ा ably display किया हुआ है. So that pink binder which was created by Dr. Naila, who's not here today, so उन्होंने वो बनाया था, तो उसके अंदर हम babies को रखते थे, and that kit, the whole kit actually cost us at that point in time 500 rupees. Then the second intervention is exclusive breastfeeding. The third intervention is infection prevention. After these interventions, how do we know that the baby survives or not? It means that when we have put the interventions in place, we need to monitor. And the monitoring has to be in terms of temperature of the baby for infection prevention, in terms of the weight gain of the baby, and to see whether the baby is breastfeeding or not. We tried to discharge the babies as early as possible, but kept them for enough time. So there were 2 Kangaroo Mother Care units. Initially, the Kangaroo Mother Care unit actually ran in the obstetric wards for a couple of years, और हमारे pediatrics was in the process of shifting. So for the first, I think, Noreen, 3-4 साल 16 में start किया था, तो for the first 3-4 years actually the KMC unit was only working in obstetrics and gynecology and not in the pediatrics department. तो हम अपने पास वो बच्चे रखते थे जो बच्चे stable होते थे. Obviously we could not keep the babies who were not stable with us, and then we would follow up the babies, which was a big challenge, and try to support the mothers. Following up of the baby in these cases is a big challenge because of the fact that फोन नंबर हमारे कभी एक नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं. मतलब ये हो गया था कि जिस फोन पे फोन करते थे तो पता चलता था नंबर चेंज हो गया. तो वी स्टार्टेड कीपिंग लाइक मेनी फोन नंबर्स ऑफ द पेशेंट एंड कीपिंग द एड्रेसेस ऑफ द पेशेंट, encouraging them to come. लेकिन जो लोग नहीं आते थे उनका हम फिर टेलीफोनिक follow-up जो था वो किया करते थे. Just one slide to tell you that our first baby was born on 1st of August 2016, and I have shared the picture there already as well.
So this is just the criteria for kangaroo mother care with which we started in 2016. We started actually with a weight of 2 to 2.5 kg. And many people would say, why did you take 2.5 to 2 kg? Because they will survive on their own. You don't need a kangaroo mother care. But we started with this weight because we thought that it is important that we develop confidence, our confidence and the patient's confidence in kangaroo mother care. So we started with a greater weight and then we started bringing the weight down. And the smallest baby that we have done is a 800-gram baby, which was saved by collaboration between PEDS KMC unit and the KMC unit of obstetrics and gynae department. So we kept the babies who were less than 37 weeks, babies who did not need an ICU, and most of the times the stay of the babies was around 4 to 5 days. We monitored the babies every day, and every day the weight of the neonate was taken, temperature was checked every 2 hours, breastfeeding every 2 hourly. It actually needed somebody to sit in that particular room where the kangaroo mother care babies were because they needed that kind of supervision. Then weekly monitoring by head circumference and the length of the baby they were measured. So the discharge criteria actually was if the baby had started gaining weight 50 to 20 grams per day for 3 consecutive days, if breastfeeding was established 2 to 3 hourly for 20 to 30 minutes, and before discharge, comprehensive counseling for home care of the babies was done. And I think that this is very, very important because if you have saved the baby for 1 week, it does not ensure that the baby is going to live if the baby goes home. So something needs to be done for home as well. And we have been requesting the government of Punjab and UNICEF to make sure that we need our the healthcare providers, the community midwives, to be trained for looking at danger sign of these neonates, and these need to be linked up to the premature babies so that they are informed कि आपकी community के अंदर इस वक्त इस घर के अंदर ये premature baby आया हुआ है तो आप उसको जाके रोज एक दफा देखें या हफ्ते में एक दफा देखें या कोई system community follow-up का develop करने की जरूरत है. And unfortunately we haven't been able to succeed in that. Somebody told me recently कि हमने उसकी एक study की है. हम उन चीजों की study करते रहते हैं जो already proven होती हैं. I don't know why don't we take action. कब वो दिन आएगा कि हम कहेंगे हमने action ले लिया, हमने study करनी छोड़ दी. So then the last thing is that the family support for KMC is very important. अकेली जो mother है उसके लिए मुश्किल होता है. So she needs a lot of people to encourage her to deal with this. This is the Kmc Follow-Up Schedule. As you see, it is quite tedious. 1 week, 1 month, 3 months, and 6 months. So this is the kind of follow-up that we maintain. But मैंने data निकाल दिया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि आज हम skills की बात करेंगे. So just saying that our survival rate for babies was significant, and we had about 4 or 6 deaths. This is just a story which I'm not going to tell you in detail, but this is the story of the 800-gram baby who was delivered in 2016 when we were very fresh in kangaroo mother care, and this baby was saved. The baby was with us for around, I think 3 weeks, and by the time the baby was sent home, the baby was 1.2 kilogram. These are just a couple of pictures to be shared with you to show you the kind of mother. So ye jo hain, oops, I'm sorry. So in the slide, if you look at the slide 3, these are 2 babies. These are actually twin babies. And if you see the twin girls over there, when they've grown older. So we have just kept these pictures to encourage you and to tell you that kangaroo mother care is possible. Kangaroo mother care reduces neonatal mortality and saves the life of the babies. Again, the 2 babies who were delivered. और ये अगर आप देखें तो इसमें डॉक्टर ताहिर मंजूर और बहुत सारे others who were actually involved in the effort, those people are there. So Noreen is there, the pediatric department is there, Naila is there, all of us are there. This is the case report that we published in the British Medical Journal about baby Gyas who was born 800 grams. And actually मुझे नहीं पता था कि इतनी, because we received a huge response. मतलब इतने लोगों ने कहा कि हमारे जर्नल में इसको पब्लिश कर दो, ये केस स्टडी बहुत अच्छी है. और उन दिनों में हम BMJ में काफी कुछ पब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. This case report was published like ऐसे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी बच्चे को बचाया जा सकता है. So I've just shared a picture to encourage the people who are intellectually oriented and who would like to do some research on the topic. ये एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन unfortunately because of some technical problem I would not be able to play it. But this is a lady from Shadra. Her name is Rubina as well, and she actually gave us her feedback
how she values the baby whose life was saved because of Kangaroo Mother Care, which was provided to her in Services Hospital. And I think this is our last slide. The lesson learned is the lesson learned is teamwork, teamwork, and teamwork. If you are a team, you are persistent, and you don't want to give up, you will always succeed. So we may not be able to reach the goal of 12 neonatal mortality in 2030, but if by 2030 we become a team all over the country and make sure that Kangaroo Mother Care is being provided to every neonate who was born preterm, I think we would have succeeded in our joint venture to reduce neonatal mortality. With this, I would like to thank you. And just a little housekeeping instruction. We are going to divide you into two groups now, and the two groups are going to do skill. बाकी डॉक्टर नौरीन आ जाएंगी तो वो जो है वो बताएंगी फर्दर कि हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है. Dr. Noreen, would you like to come over here and give some instructions, and then we'll move forward. Thank you very much. We are going to teach skills. On one side, KMC position, and on other side, breast massage. So half of you come to this side, और फिर उसके बाद हम रोटेट कर देंगे. तो आप हाफ में डिवाइड हो जाएं और एक इस टेबल पे आ जाएं और आधे इस टेबल पे. So important topic is breastfeeding. How to start breastfeeding immediately after. Okay. अच्छा, आप लोग जब आपके पास बेबी आते हैं, डिस्टर्बेंस होती है.
अच्छा, अब ब्रेस्ट मसाज के मैं 5 स्टेप्स बताऊंगी। हाँ, 8 to 10 टाइम भी कर लेते हैं अगर वो थोड़ा उसमें ना ठीक है, हम ये वो ज्यादातर बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे होते ना, फॉर्मूला फीड कर रहे होते, उसमें ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थोड़ा खराब है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, इसमें फिश बनानी है। फिश बना के एक अपर एंड पे रखनी है फ्लोर, ठीक है। ये हम डीप टू सुपरफिशियल आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह 50 बनानी है और उसको रोल करते हुए आना है। 1 2 1 2 ब्रेस्ट इंवॉल्व हैं तो आपने और मैं आपको ये आपने नॉर्मल सिर्फ मिल्क लेता है, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट इंवॉल्व माइल्ड से हैं, आपने किसी भी पेशेंट की फेस की देखना है कि पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो। ब्रेस्ट इंवॉल्व में तो मिल्क स्पेशल से आ जाएगी। ब्रेस्ट साइकिल स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स पे स्पेशल। अच्छा, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप था फोर्थ स्टेप एरियोला जो है ना, बिल्कुल सही ग्रेवी फॉर्म है, ठीक है। 3 to 4 सेंटीमीटर के एरिया होता है। इसे थर्ड से करना है आपने, सी बनाना है। अब होता क्या है कि डीप डक्ट्स में आता है और डक्ट से हमने एक्सप्रेस करना है। ये भी 3 टाइम्स करना है। ये है कि फाइनल स्टेप जो 5th नंबर का स्टेप वो है, इसमें आपने इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान में निकल को लेना है और आपने इसको इस तरीके से लेना, स्टिमुलेट करना और ये करना 3 to 4 मिनट्स ठीक है। इससे क्या होता है, स्टिमुलस जाएगा ब्रेन को और फिर क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी और वो कंट्रैक्ट करेगी लंग्स को और डिफ्लेक्ट आउट। तो ये आपने सो फर्स्ट स्टेप था, थर्ड और फोर्थ सी बनाना है। ये मदर को ही सिखानी चाहिए, ये मदर ठीक है। उसके बाद अगर कोई कहना है कि जब आपने ब्रेस्ट फीड कराना है ना, हर 2 घंटे बाद फ्रीक्वेंटली लेना या ऑन देना, तो जब भी आपने ब्रेस्ट फीड कराना है उससे 10-15 मिनट पहले आपने ब्रेस्ट मसाज स्टार्ट कर देना है। बेबी को बोल देना, जब आप स्टार्ट कर देंगे फिर आपने लेना है 1 या 2 दिन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बेबी खुद ही रिसीव करना शुरू हो जाता है। इवन बेबी क्रैक कहीं और कर रहा होता है, मदर को लेट डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना है हमें, और बात हम कर रहे होते हैं जैसे को पता ही नहीं होगा। पहले दूसरे स्टेप पे ये लेट डाउन स्टार्ट हो जाता है और फिर ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हो गए और 2 स्टेप्स हैं आप मिल्क एक्सप्रेशन। इसमें क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, एक अपर और लोअर मार्जिन को मार्क करना है एरियोला से, निपल से, ठीक है।
ये लोअर मार्जिन को और एरियोला पेट के पॉइंट और एरियोला मार्जिन को, ठीक है। और उधर आपने सी बनाना है, ठीक है। फिंगर और ये थंब से और इंडेक्स फिंगर से मेक अ सी, ठीक है। सी बना के प्रेस टुवर्ड द चेस्ट करना है और देन स्क्वीज, ठीक है। समझते हैं मेरी बात ना? इसको मार्क करने का मकसद क्या है कि इधर से मूव होके निपल की तरफ ना आए, बना इंफेक्शन प्रेस निपल स्लो हो जाएगा, ठीक है। और पेन होगा बहुत ज्यादा, तो इस तरह, ठीक है। इस तरह इन दोनों को फिक्स रखना है। इसको पहले प्रेस करना है टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज, ठीक है। प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज, प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज। आप देख रहे हैं क्या नजर नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है। उसी दौरान आपने कहना है मदर को से नीचे और यहाँ बेबी को डायरेक्ट नीचे बेबी का फेस रखे और बेबी को मुंह रखे और बेबी को मतलब निकल दे और फीड कर press toward the chest and then squeeze, press toward the chest and then squeeze। समझ आ गई इस बात को? make a C, ठीक है। ये है डिस्टेंस होता है निकल से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें 2 to 4 सेंटीमीटर तक अवे फ्रॉम द निकल होता है। एक ऊपर मार्क लगाना है नीचे, लेकिन ये जो ब्लैकिश एरिया है अराउंड द निकल उसको आप एरियोला कहते हैं, ठीक है। उसके उस पॉइंट में होना चाहिए और आपने उसको रेस्ट करना है टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज, ठीक है। अगर आप प्रेस टुवर्ड द चेस्ट नहीं करोगे और सिर्फ स्क्वीज करते रहोगे तब नहीं आएगा। जैसे ये होगा कि डक्स जो है ना प्रेस होती हैं और फिर जब स्क्वीज करते हो तो डक्स से डक में आता है, जब आप प्रेस करते हो डक्स में आ जाता है और फिर डक्स से बाहर निकलता है जब आप स्क्वीज करते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्टेप्स मिल्क स्पेशल। फर्स्ट मेक अ सी देन स्क्वीज, ठीक है। अब क्या है पोजीशंस, मदर को पोजीशंस ही नहीं पता है। वो जो फर्स्ट मदर होती है मतलब प्राइमरी ग्रैविडा जिनका फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, ठीक है। तो ये सेकंड सेक्शन के बाद वो लेटी होती है उनके मैं कैसे दिखाऊंगा, तो आप मुझे बताना है कि दे आप वैसे तो बाकी पोजीशन पे 4 बोल है ना जो पोजीशन है वो बता रहा है। जब मदर लेटी होती है अपने साथ लिटा के तो पिला सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन है बेबी में ये है कि आपने एक तो होता है ब्लैडर और एक होती है क्रॉस ब्लैडर। ब्लैडर जिसमें ये है कि इस सारी के बाजू के ऊपर आपने होल्ड किया बेबी को, ठीक है। जिस साइड पे सारा, ठीक है, जिस साइड पे आपने होल्ड किया, ठीक है, जिस साइड पे आपने फील करवाया, सही है, उसी साइड के बाजू से आपने ये ब्लैडर। अगर दूसरी साइड पे ऐसे हाथ लेके आते हैं और आप सपोर्ट करते हो फिर आप लेफ्ट ब्रेस्ट से करा लेते हैं राइट आप तो ये नहीं कंफर्टेबल, ये क्रॉस ब्लैडर कंफर्टेबल सारी होती है, ठीक है। एक होती है आप लेटे हुए और साथ पे शुरू मैं स्टैंड लेके चला, स्टैंड के बगैर ज्यादातर बेटी नहीं ये ब्रेस्ट नहीं करेगा और दूसरा क्या है कि ब्रेस्ट जो ओपन होना चाहिए, जो लोग भी उसका कर्ल डाउन एकदम कर्ल डाउन लाइन एक ही लाइन मतलब इसका ये भी है एक लाइन में होने का मतलब ऐसे 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 एक लाइन हो जाए तो और एक सी लाइन इसका लेकिन हेड थोड़ा सा ऊपर हो लेकिन हेड थ्रू ना हो के इसमें एंगल आ जाए, ठीक है, एंगल ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा चला ये पोजीशन होगी बेबी का माउथ वाइडली ओपन होगा मोर देन हाफ होगा लोअर लिप पर डाउन होगा और बेबी की बकायदा आवाज आएगी जब वो सर करेगा एडिक्वेट फीडिंग से मैंने आपको बता दिया साइंस क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेट गेन नंबर ऑफ और इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम देखते प्रैक्टिकल को कैसे सही करना है, आप मदर को कहना है कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीड और देन उसको
रिटेल कर लिया कोई, लेकिन फीडिंग के बाद मतलब ये कि फीड करने से पहले अगर लगाएंगे तो कोई अगर फीडिंग लगाई होगी तो फीडिंग, तो इसके अलावा पोजीशन ठीक करेंगे, ये ना हो कि पोजीशन किसी तरह की पोजीशन सही होगी तो क्रैक नहीं करेगा, अगर बेसिक पर कोई सब करेगा तो क्रैक अगर वो बोले हाँ करेगा मतलब वो ऐसा करेगा तो नहीं। दूसरे नंबर पे और क्या होता है, क्या पता प्रॉब्लम्स आती है इंकॉर्ड ब्रेस्ट। अब इंकॉर्ड ब्रेस्ट क्या है, बात है इंकॉर्ड ब्रेस्ट में आप एक साथ नहीं कर सकते, बहुत पेनफुल है। ब्रेस्ट फीडिंग हम देते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादा यही है कि पीने पानी नहीं है, अपनी खुराक का ख्याल रखें, खुद भी दूसरी है, एडिक्वेट हाइड्रेशन हो और इसके अलावा मसाज हो, कोई मतलब ऐसा बेबी नहीं पैदा हुआ जिससे स्पेशली उसके साथ, ठीक है। अपनी डाइट ठीक होगी तो ब्रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी हाईलाइट वगैरह का कुछ ज्यादा वो नहीं है कि ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ देसी टोटके होते हैं वो करते हैं, लेकिन ज्यादा ये है कि आपको एडिक्वेट फीडिंग ठीक है, और जितना फ्रीक्वेंट लाएंगे बेबी को उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम कौन से इंकॉर्ड ब्रेस्ट की बात करें, इंकॉर्ड ब्रेस्ट जब नहीं रहेंगे तो ब्रेस्ट इंकॉर्ड और इंकॉर्ड ब्रेस्ट के साथ फीड कराना बहुत पेनफुल होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत नॉलेज को भी है स्ट्रेस कर रहे ब्रेस्ट और ब्रेन के कोई वो है ब्लड प्रेशर और उसको कि जेंटल मसाज करेगा तो जेंटल मसाज से भी पेन हो रही है ना, तो उसको यही है कि मॉम वॉइस प्रॉपर है, ठीक है, और उसको इसका ब्रेस्ट के पे ये सिर्फ जो है निपल वाली जगह से बाकी कोई उसकी तो सॉफ्ट होंगे और मिल्क बैठना स्टार्ट होता है, और जब आप एम्प्टी कर लेंगे ब्रेस्ट को तो उसके बाद वो नॉर्मल फीडिंग स्टार्ट करा दे तो उसके बाद, लेकिन अगर इनको ज्यादा हुआ है और साथ ही इन्फेक्शन भी है फीवर भी है तो वो एक्सेस में करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और क्या लें और दूसरी साइड पे लेकिन ठीक आ सकते हो, देख सकते हैं एक्सेस बनी हुई है, दूसरी साइड पे आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा की है कि अगर इस तरह की एंटीबायोटिक वगैरह लेने से और मिल्क जब उसमें एक्सेस में भी ये है कि आप मॉइस्ट टॉवल में बैठोगे ना तो वो एम्प्टी ऐसे होते हैं, ठीक है, मैंने खुद देखा है ये परफॉर्म करके कि एक पेशेंट में और मिल्क खुद ही ऐसे लेता हूँ जैसे आपने टैप इस तरह निकलता है, जब वो एम्प्टी हो जाता है और आपने एंटीबायोटिक दे दिया इन्फेक्शन को अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, लेकिन मैंने ऐसे केस देखे हैं मल्टीपल जगहों पे बन के तो वहाँ से सीट को दिखा दिया, तो वो जो स्टेज केसेस अगर आप अर्ली पेशेंट को आपने कंसल्ट किया है अर्ली एड्रेस को आपके पास आ जाते हैं। अब एक और प्रॉब्लम है इमर्जिंग जो आपने एक है ये स्टेज मैंने ये नॉर्मल स्टेज ठीक है, इस चीज को इस साइड से जिसको निकाल के आपने इस साइड से काट के ना इस तरीके से जब आपने काट लिया आपने इस साइड से इंसर्ट करें, वैसे तो नॉर्मल साइड पे आपने आपको इस साइड पे इंसर्ट किया ताकि जो रफ एज है इस साइड पे आ जाए और स्मूथ है इस साइड पे आ जाए। इन्वर्टेड निपल वाली जगह अगर फॉर एग्जांपल ये है इन्वर्टेड निपल वाली जगह, ठीक है, यहाँ आप नेगेटिव सेक्शन एक्चुअली नेगेटिव सेक्शन से आपने अप्लाई करना है स्टेज को और आपने जब उसको विथड्रॉ करना है तो निपल आर्टिफिशियल अगर आप देख सकते हो तो छोटा सा हाफ बेबी बनना शुरू हो गया, और अगर इन्वर्टेड निपल है तो वो लेकिन ये पेशेंट को कहना है 15 to 20 मिनट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग ये प्रोसेस स्टार्ट करें और इस तरह करें कि ज्यादा पेन ना हो, ऐसे किया है वो थोड़ा सा जैसे करके ब्रेस्ट फीडिंग करके फिर सेपरेट कर दें, ये थोड़ी देर बाद ऐसे कर तीसरा फर्स्ट 3 टाइम्स करना पड़ेगा, बेबी जब थोड़ा सा निकल बन जाए तो बेबी को साथ लगा के टेस्ट कर देना, जब फीडिंग स्टार्ट कर देगा बेबी तो 2-3 दफा के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही फीड कर करके ना बेबी उसको एवर्ट करेगा। जी हो जाता है, इस तरह करने से भी आपको बिल्कुल निकल नहीं होता तो वो आपने जो है ना आर्टिफिशियल वाले जो है वो अटैच करके स्टोर से कर सकते हैं। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट है बेबी का, ये तो प्रॉब्लम मैंने मदर की बता दी है ना, क्लेफ्ट पैलेट है बेबी का तो वो सी आती है शेल्फ पैलेट आर्टिफिशियल वो उस तरह के निकल सकते हैं, वो आप अटैच करके उससे भी फीड करा सकते हो। और ऐसे बेबीज को जो बेबी वो जो
को रिफ्लेक्स नहीं आया, ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स की जो फ्लो फ्रीडम होते हैं, तो उनमें आपको कप फीडिंग भी करानी पड़ सकती है। कप फीडिंग हो या स्पून फीडिंग, उसका एक तरीका है कि आपने कप में एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क लेना है, आपने जस्ट टच पे, ठीक है, लोअर एज पे आपने इस तरह टच करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एक रिजर्वायर सा बना हुआ है, आपने जब इसको इस तरह करके इतना सा लेके आना है, ठीक है, आपने पूरा नहीं बेलना नहीं है। जब आप इस तरह टच करोगे तो बेबी अपनी जबान खुद ही निकालेगा और बेबी लीक करेगा, ठीक है। इस तरह करके बेलने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या चांसेस होते हैं, स्प्रेड होता है, इसीलिए जरूरी है कि आपने जस्ट टच किया और वो जो है ना, तो मैम तो आवाज आती है जी, वही ये सब आवाज आती है और ये जो है ना बकायदा अंदर जाते हैं, ये उसकी फीलिंग के बेबी सेटिस्फाइड है कि नहीं है, कि फील कर रहा है कि अब साथ लगा हुआ है बाजू का, तो बेबी मतलब आजकल के बच्चे को पता ही नहीं चल रहा होता। और फिर जब उसकी आप मदर को कहना कि आपने चीज देखी है अंदर पहुंचने वाले और उसके अलावा एक्सपेक्ट साउंड आती है, उससे पता चलता है कि बेबी हाँ। और ये जब आप फीड करवाने ना मदर को कहना है कि बेबी को और नीचे जस्ट रख दो, ठीक है, और बेबी रिगार्ड लेगा, ठीक है, और बेबी को ठीक है, अदरवाइज क्या होगा एस्पिरेट कर। अब जो हमारा कैंगरू मदर केयर का था, इसमें ये अहम बातें इसीलिए थी क्योंकि कैंगरू मदर केयर में प्रीटर्म बेबीज पैदा होते हैं, तो बेबी का फीडिंग रिफ्लक्स नहीं आया होता, सकिंग नहीं होती, ठीक है। तो अभी उसके लिए ये है कि मिल्क एक्सप्रेस करे मदर, ठीक है, और कप में या स्पून में जिसमें भी, और इस तरह भी, ठीक है। उसका बस यही है कि बेलना नहीं है, जस्ट टच करना है लोअर लिप से बेबी। और दूसरा ये कि ठीक है, और ये कि प्रीटर्म बेबीज जो होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग के, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपोथर्मिया होता है, इसलिए इन्फेक्शन। जब वो मतलब फीड करवाएगी तो वो एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा, तो जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया से बचेगा। दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया से, और तीसरा इन्फेक्शन से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो वगैरह होती है वो भी हेल्प करती है ना बेबी को। और दूसरा ये जो अहम बात है कि कैंगरू मदर केयर की हम पढ़ा रहे हैं, कैंगरू पोजीशन आप उधर पढ़ोगे तो जब कैंगरू पोजीशन में होगा ना बेबी, तो इसमें ये है कि आप इसी पोजीशन में ही बेबी को स्लीप करवा सकते हैं। आपने जस्ट बाइंडर थोड़ा सा यूज करना है, थोड़ा सा बेबी को ट्रीट करना है और इस तरह भी करा सकते हैं। दूसरा क्या कि फ्रीक्वेंट फीडिंग, और बेबी मदर के चेस्ट के साथ रहेगा, बेबी ब्रेस्ट स्लीप को स्मेल करता है तो बेबी खुद भी फीड करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग से कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं ब्रेस्ट के साथ दिखाइए। आप डिसाइड करते हैं 2 बच्चे को स्टेबल है, ये फर्स्ट में सेकंड क्वाड्रेंट जी आपने एक सी बनाना है, सी हाफ सी बना वो सारे आपने स्टैंडर्ड, लेकिन जो नहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट्स को स्टैंडर्ड वो जी मैंने 6 महीने की है, सेम हो गया जी चेंज पर जी बिल्कुल नहीं इस समय करना आपने बस ऐसे ठीक है।
ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके पास तो well off parents होंगे तो donate करो, tell them to donate because it can be made locally by anybody. ठीक है, it's stretchable. अच्छा हमसे ये टाइम का हो रहा है वो ये था कि ये डिस्कशन इसके पास डिस्कशन का इसकी कॉस्ट इशू है sustainability. आपसे इधर ब्रेस्ट मसाज ये वाले वो तो फिर हो गया। आपको दिए नहीं, आप ले लें ये सेट ले लें, आप सबके टेबल पे रखें, वो देखो वहाँ से ले 5 सेट। ओके तो आप और चला जाता है बच्चा और जब तक माँ का
Five steps. इससे हम लीव्स पोजीशन ले गए अब डक्स में बढ़ाऊंगा स्ट्रेस कर इसके टू स्टेप्स और इसमें ये है कि फर्स्ट जो है आप मार्क कर लेना है इस साइड से बेस साइड से ये जो है एक पार्ट होगा एक ऊपर मार्क करना है हमें पूरा हाथ चलना है तीन हाथ से आपने मूव नहीं करना दो तरीके से और क्योंकि फिर तक मूव करेंगे और उसके बाद आई और पेन बस ये का और प्रेस टुवर्ड द चेस्ट लेट्स प्रेस और आप प्लीज अच्छी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड प्रेस रीअप करना है तो देखो थोड़ा सा टाइम किया प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड इससे हमने अगर जैसे क्या होगा यू नो लाइक मुझे थोड़ा और ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इस तरह से मैं दो फिंगर और अगर आप चाहते हो
बाकी तो इसलिए अगर आपने करना शुरू कर दिया ठीक है और दूसरा भी रख सकते हैं उसके अलावा जो है इसमें हम प्रिपेयर्स ये और दूसरी साइड का क्रॉस करके बाजू लेके आप आए और चेक और फिर अगर राइट पार्ट सपोर्ट करे और लेफ्ट साइड की ये क्रॉस डायरेक्ट फेस करना चाहिए और इसके अलावा क्या होगा ये ना होगा ये वाला टेम्परेचर ये वाला इसलिए ये और जब स्किन कल हम आती है तो सारा डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है तो हम देखते हैं इसको एक्सप्रेस करके डुप्लीकेट फिर हम आते हैं क्या तो 7 ग्लास से पहले मगर और किसी को पानी बहुत सटीक हम कहते हैं केएमसी करें एटलीस्ट 37 वीक्स की उसकी gestation बाकी वो अगर जैसे बहुत जो है तो फिर ये और चलिए अगर यहाँ नीचे ना 6 to 8 hours जब वो काम से पानी को विभिन्न तरह से काम सकता है रिजल्ट कहते हैं इसका अप्लाई कर लो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा और क्या प्रॉब्लम हाँ टर्म में जिसमें हम
या उसकी excessive breathing है, ये कोई भी बिल्कुल कंफ्यूजन वाला फिनोमेना है। वर्किंग क्लास में आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि वर्किंग नॉट दस घंटे काम इसके लिए आपको एक स्टोरेज की बताऊंगी जब रूम टेम्परेचर नॉर्मल जैसे आज तो आप 6 आवर्स का कंप्लीट स्ट्रेस करके बस वर्किंग मदर है ये कौन सा तरह बहुत जरूरी है ये छोड़ के जाए अपने बच्चे के लिए अगर आप साथ अदरवाइज तो ये होना चाहिए कि हर ड्यूटी प्लेस के साथ ही काम हम लोगों ने शुरू किया था। फिर आपको पता है गवर्नमेंट का मतलब पूरा रेगुलेशन सारी तैयारी करने सारा कुछ डिजाइन करके दिया था, वर्कशॉप कराने शुरू किए लेकिन एक वर्कशॉप के बाद दोबारा इसमें ये है कि आपने एक तो मतलब साथ क्या नहीं है और इसके अलावा 2 दिन के बाद इसको फील आएगा। अगर आप में अपने ड्यूटी रूम में जाती हैं तो अपनी स्ट्रेस करती हैं बेस्ट ठीक है और भी बहुत वगैरह खाती हैं। जब वो घर जाती हैं और के साथ तो जाके Does this
स्पून फीडिंग है ऐसे सिनेरियो में Feasible भी ये होता है ना कि कुछ रिलैक्स होता है थोड़ा और क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मैं पूछना मैडम मैं जा रहा हूँ स्पून फीडिंग में भी सेम फिनोमेना नहीं शावर ये है कि ब्रेस्ट मिल्क से जब वो लेते हैं ना तो उसका टेस्ट जाता है दूसरा ये कि उसमें थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है और फिर ये ड्रॉप बैक करते हैं ये better to follow Mali and the spoon and cut is better way of feeding तो हमें इतना मतलब बहुत ध्यान से लेकिन इस चीज में इतनी रेजिस्टेंस है कि नहीं हम अगर तो आप कहीं 5 मिनट लिखकर जैसे डॉक्टर लेकिन आप कहेंगे कि मैं जस्ट टेस्ट करेंगे और ना कि आप देखना होता है इसका क्या होगा जिसका फायदा मिले उसे करना चाहते हैं और से बचेंगे और मैंने एक दो महीने के बच्चे डाली बच्चे नहीं आ रहा मुझे ये चीजें पर आप उसमें अगर किसी वजह से और आईसीयू से उसका ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके एक्सप्रेस करके बॉटल होके उससे निकले और एक दो दिन के लिए या कुछ डेज के लिए दूसरा देना सिर्फ जैसे बहुत छोटी है आप या बेबी अगर एक्सप्रेस वाटर में ना मैं आपको ये कह रही हूँ कि मॉनिटरिंग अगर करें तो बेबी प्लस उसमें पानी डालें तो भी वो मर जाए जो भी डालोगे या कुछ डालोगे इसमें वो मरेगी चाहे आप छुट्टी डाली छुट्टी ने पिया तो मेरा देख पड़ रहा है वो मर गई तो वो वैसे ही लेबोरेटरी वाली बात जो करते हैं और उसे ये काउंसलिंग है आपके पास अपन
ये वोटिंग प्लेस वाले क्या करेंगे अगर उसमें लाइफ सेल्स आ रहे हैं आप इसको purchase करेंगे। ये इसीलिए मेरे को फिर तो नहीं है जब आप होगी तो होगा ही सही। नहीं यहाँ ऐसे रिपोर्ट है आप सेंट्रल ना भी दे दो रिपोर्ट लेकिन ये आप हम लोग भी मतलब पिछले प्राय अपन ले लेने का बच्चे को ले लो बस आप देखो बहुत बात है एक चक्कर आगे बीच में हो जाता है सारा और उसी ऐसे बच्चे ने आपको ट्राई कर लिया ना अभी तो ट्राई कर लिया ना Thank you. इसकी लाइट नहीं खुल रही इसकी लाइट नहीं Thank you, Professor Rubina, for wonderful session and delivery of skill. Hopefully, you will learn a lot from Madam, and inshallah, you will apply skill in your respective department. Now, I will request Brigadier Kangaroo to give some of the further closing remarks. That's it. Thank you, Dr. Prof. I am honored and honored to be here. Before I start, I will offer my heartfelt gratitude to our guidance on this wonderful interactive workshop, Professor Rubina and our wonderful team, Dr. Noreen Rasool, Dr. Abbas, and Ms. Anmol, and obviously the organization of this Neonatal. In the last couple of hours, we have seen that where there is a will, there is a way. We, as neonatologists, as pediatricians, we are in the habit of discussing, and we feel somehow happy in a very high-tech stuff. Like we would like to have next generation sequencing, we will have whole genome sequencing, we have CDH arrays,
metabolites, neurometabolites, something which is by virtue of my subspecialty is close to my heart. But here we have seen that we can make a difference by just having knowledge, skills, and sensitization, and a little bit of teaching and training. They say, a very wise man once said, and I quote, जहाँ ख्वाहिश है कल्बी पर फराइज़ मनसबी गिर जाए, वहाँ से खुशकिस्मती की नज़र शुरू होती है. So I think probably it was said for this scenario. We have seen that by virtue of very simple technique and without any expense, we can make a difference. And I think this is the whole essence and whole, crack of the matter is that we have gathered here and we have decided to learn and implement new techniques in which we can make a difference. And what a wonderful way of making a difference by preventing the problems that haunt us. And as ma'am very rightly said, that we are on the top of, charts, top of the podium for all the wrong reasons. The reasons are we are highest in the neonatal mortality, we have premature babies, and we have high morbidity and mortality in the world. And these simple maneuvers, these simple techniques, we can prevent them. I was fairly amused by the ma'am when he said कि पीड्स वाले आते हैं तो बच्चा लेकर भाग जाते हैं. वो कहते हैं हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था, अगर लेके भागते हैं तो उसकी कोई रीज़न भी है. We want to just stabilize the baby, and if we have seen that we can stabilize the baby, and it's a way that we can have so many positive effects not only on the mom, baby, and it can have long-term better neurodevelopmental outcome if we are able to combat the infection, we are able to start the nutrition, and we are able to maintain good bonding between mother and baby besides so many beneficial effects that we have seen. So I think in the end, I would like to thank again the organizers and ma'am for her. And before I go, let me tell you, वो कहते हैं ना, I just read, वो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है, something like that, or या बात दिल से निकलती है, ऐसे रखती है. I have very rarely came across and heard a talk which is coming straight from the heart. So it shows that there is a passion, and when there is a passion, the change is likely to come and change is coming. So again, thank you very much and congratulate ma'am on a wonderful team for doing this noble job. And this is something doable, this is achievable. This is not a rocket science. We are not going to launch a space shuttle, but with this effort, we will be able to make a change and we'll do it. So thank you very much again. I must congratulate the trainers, the trainees who have attended the workshop, and I think they have learned something, learned new skills, and they'll be able to implement in their respective units. So thank you very much, and good luck to you all, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir. I will request you again to please come on the stage for the distribution of souvenir. I would love to do that. So first I will call Professor Rubina Sohail. Please come on the stage and receive shield from the chief guest. Dr. Shahzad का शुक्रिया अदा करना है for the whole amount of work that he did at the back. Never coming forward, never saying anything, but बहुत काम किया आपने. Thank you very much for that. Dr. Noreen Rasool.
Miss Akila Abbas. Now I will request Dr. Rana Vakas Shakir, who was moderator of this session and came all the way from Multan to moderate your session to receive your souvenir. Now I will request Professor Rubina Sohail, ma'am, please come on the stage to present this souvenir to our chief guest. Thank you. A special shield for Dr. Shahzad for doing all that hard work in the background. And one special round of applause for all the participants who came here on a Sunday morning. We know it's not easy. So apne liye khud bhi taaliyan baja lein. Thank you very much for being here. I'm grateful. Thank you so much, all participants, speaker, and chief guest. Thank you so much.